Good afternoon to everyone. Before I start, please confirm in the chat box if my sound is clear to all of you, if I am clearly audible. Okay, thank you very much. Now, please confirm if you can see the screen which I have shared to you. Okay, thank you very much. So, once again, good afternoon to all of you, and I, Vikas Kumar, the resource person for this online in-house training, Sahodaya training, sorry, organized by Patliputra Sahodaya on the topic integrating NEP 2020 guidelines in science education. Respected teachers, before we start, as we all know that NEP has been introduced, and from a very long time we all have been talking about NEP and the ways to implement it. Our schools, the management have been trying to find out a better way to implement it. And at some extent, CBSE, the school management, and the other educating bodies have got success in it also. But NEP is not fully implemented yet. And as teachers, we always have a issue. We always think that how NEP can be incorporated in our subjects. Is this something that we need to do? Or we just have to keep on teaching in the old fashioned way as we used to do? So in this session, we will be discussing about the things that are going to be changed in NEP, the wage which now we have to implement so that our education, the learning of the students, the learners, does not hamper and it increases day by day. So let's dive into this section and let's see the very first thing, that is introduction to NEP. Through this, we will be discussing about NEP in very brief, and then we will be shifting to our own topic, that is integrating NEP in science. So as we all know, NEP, the National Education Policy 2020, aims to overhaul the Indian education system. And how is that planning to overhaul? It is planning to overhaul by promoting the holistic development of child, by having some flexibility in education, the multidisciplinary approach in education, the customized and personal guidance that needs to be given to the learners. NEP focuses on all these points. And not only this, NEP also focuses on the vocational training from early stages. Now, these all have been framed, and there is a very long and complex framework that is mentioned in NEP. In a crux, we all have noticed, we all have been seeing the changes that are going on, and we come to a conclusion that it's a revolutionary framework after all. Why? Because it introduces a provision of integrating technology in education. And the motto behind is the educators, the body of education, which we say, they plan to enhance the learning experiences of the learners. We as a teacher, we also seek to ensure the equitable access to the quality of education. Whenever we go to our classes, we plan that thing. Not only this, NEP advocates for the inclusion of disadvantaged groups. And when we talk about disadvantaged groups, see, the government has already implemented the RT, Right to Education Act, so that those who are not who chance due to some financial issues, they can get a chance to study. Now, when we talk about the disadvantaged group, in a whole NEP, it is also included, but when we talk about CBSE, the schools admit 25% of the students under RT, so economically backward
section of society is not a very big issue for us because our schools have a policy, CBSE have a policy to educate them. But after that also, the second disadvantaged group is the one who is physically disadvantaged, whom we called differently abled groups. So NEP plans to integrate them also. We'll discuss about all these things in inclusive education. We call it inclusive education. So that a environment of inclusion can be created where each person, where the team belongs to each caste, each race, each community, where discrimination is not going on. It is a framework that is mentioned in NEP. Now, when we talk about transformation, the transformation goes on by reassessing the curriculum, whether it is CBSE or it is a ICSE board or it is any regional board of any state. They all have to now reassess their curriculum, the methodology, the pedagogical processes that they were planning and implementing. And NEP 2020 aspires to bridge the gap which remains there between a learner and a teacher. The gap which remains between our learning objective and learning outcome. That gap needs to be bridged and it is aspired by NEP 2020. Now, this all changes are very important because the world is changing very fast. And in this changing landscape, our learners need to be prepared. Now, if we talk about the key focus areas of NEP 2020, first, the transformative elements. What are the transformative elements in education? See, NEP 2020 emphasizes on multiple focal points such as curricular flexibility. We have discussed about these things already. That after implementation of NEP, there has been a flexibility in the curriculum. Not only this, NEP promotes multilingualism. Now we have got the instructions that in the first stage that we call preparatory stage, the five in nursery, LKG, UKG, standard 1 and 2, the medium of instruction has to be in the mother tongue or the regional language. It can be Hindi, maybe in some places it can be English, or it can be any other language of that region. So through this, NEP promotes multilingualism also. And we have seen that NEP also emphasizes on integration of vocational education, the skill subjects, due to which the skill of our learners increases. They become a skillful resource for the country. And the last point, which is important, NEP 2020 emphasizes on enhancing teacher training. And today we are discussing all these things due to that part only. Because the NEP has told and NEP has told, so CBSE is following it. And due to that, we are now having this discussion through an online channel, thanks to Patliputra Sahodaya, that we are discussing about all these things. So enhancement of teacher training is also necessary. Now, when we talk about teacher training, a question always arises that why teacher training? You were changing the curriculum, it was okay. You were changing the methods of teaching, it was okay. You were changing the mode of assessment, it was okay. What was the need of teacher training? Respected teachers, the need of teacher training is due to the rapid change that is going on. See, the curriculum is changing. It may happen that in a group of 100 teachers, 98 teachers are updated that yes, the curriculum is shifting and they are preparing themselves to shift accordingly, but there may be two teachers out of that 100 who are not prepared. So teacher training is required. When we talk about change in assessment practices, it may happen that one, two, or a few number of teachers, educators are not fully prepared or they are not able to understand the new
format. So teacher training is required. When we talk that vocational subjects are getting included in our curriculum, when we talk that now we focus on holistic development, training is required. And after all, a regular training is always required in each and every field, not only in education, not only for the teachers, to keep the employee updated. Like we have seen, हमारी टीवी पे टेलीकास्ट होते रहते हैं एवरी ईयर आर डिफेंस सेक्टर्स, द इंडियन आर्मी, द नेवी, द नेवल एकेडमी, द एयरफोर्स, दे डू वॉर प्रैक्टिस. कहीं युद्ध नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो हर साल वॉर प्रैक्टिस करते हैं. व्हाट्स द रीजन? ऐसा तो नहीं कि गोली की एक्सपायरी डेट आ गई थी या जो बॉम्ब्स थे उनकी एक्सपायरी डेट आ गई थी, सो इट वाज नेसेसरी कि भाई एक्सपायर हो रहे तो यूज कर लो. इट वाज नॉट लाइक दैट. देयर आर टू रीजंस. द फर्स्ट, to keep the soldiers updated about the new armory, the technique, and the methods of tactical wars. Second, to show the power to the rivals, to the enemies. Second one is the political reason. Likewise, आप किसी दूसरे प्राइवेट जॉब में जाएं, you choose a sales job, you choose a marketing job or anything, you choose a desk job, you choose a back office job, आप बैंकिंग सेक्टर में चले जाएं, आप क्लरिकल सेक्टर्स में चले जाएं, you will see that few trainings are going on in each sectors. But there was one sector which was not having any training session. हमारे यहाँ क्या था, हमारा जो सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं, दैट टीचर्स ट्रेनिंग लेके आए, स्कूल में अपॉइंटमेंट हुई, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, एंड देन no training was given. Now if no training is being provided to an educator, eventually the knowledge, the skill, it will fade away, because you will customize yourself according to the learner. And after a very long period of time, you will forget what was the actual plan. Why did you join this sector as a teacher? And when I say this, I always say that if you are a teacher, never say that you are an accidental teacher. You are a teacher by your choice. And when you chose this field, when you chose this field of education, you chose this not because of the salary, not because of less workload, because you wanted to make this country, to make this the future of this country brighter. So training is required ताकि ये बातें आपको याद आती रहें कि ये मेथडोलॉजी है, इनको आप फॉलो करते रहेंगे तो जो आपका सपना था जिसको देख के आपने टीचिंग फील्ड ज्वाइन की थी वो पूरी हो जाए. नई टेक्निक्स आएगी तो उनके बारे में जानकारी मिलती रहेगी, कोई भी नए चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, उनकी जानकारी मिलती रहेगी. जस्ट लाइक हमारे फोन में एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसके मैसेजेस हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, रिप्लाई नहीं करते. क्यों? क्योंकि उस पर डेली सुबह न्यूज आ जाती होगी, अच्छे अच्छे सुविचार आ जाते होंगे. ठीक वैसे ही आप ट्रेनिंग को मान के चल सकते हैं कि ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशनल लाइफ which keeps us updated about each and everything, each and every change, each and every new rule, new strategy or new way of teaching or evaluating. कोई भी नई तरीक, कोई भी नई तकनीक जब आएगी तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी पूरी जानकारी और उसको सिखाने का जो काम है वो टीचर ट्रेनिंग के थ्रू किया जाता है. नाउ विद अ विजन ऑफ होलिस्टिक education, NEP 2020 aims to foster critical thinking, creativity, and a deep understanding of subjects. Now, when we talk about holistic development, it is a very used term क्योंकि यहाँ पे काफी सारी skills की inclusion होती है. Like it says that it aims to foster critical thinking. No, a very big question comes that ये critical thinking आएगी कैसे? कौन सा टीचर है जो critical thinking सिखा रहे हैं बच्चों को? हम आप हमारे स्कूल में देखेंगे, हम अगर देखा जाए तो कोई टीचर नहीं है जिनका सब्जेक्ट क्रिटिकल थिंकिंग है, जो जाकर बच्चों को बता रहे कि नहीं देखो क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सारे टीचर जाके बोल रहे थे कि साइंस का ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल साइंस का ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है.
इंग्लिश ग्रामर का ये वाली टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो वन सेज क्रिटिकल थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट। आर्ट के टीचर को छोड़ दिया जाए, साइंस के प्रोजेक्ट्स वगैरह की बात छोड़ दिया जाए, नो वन टॉक्स अबाउट क्रिएटिविटी। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू फॉस्टर दिस क्रिटिकल थिंकिंग। और ये क्रिटिकल थिंकिंग फॉस्टर होगी, हम ही से होगी। वी विल बी डूइंग इट। हाउ? बाय हैविंग अ ग्रेजुअल शिफ्ट in our method of teaching. Next is NEP 2020 focuses on student-centered approach. Now, from a very long time, what was happening in our country or what was happening in our schools, that teachers were going to the classes, they were having a plan, they were having a set of knowledge, and they used to deliver the lecture, they used to write the content on the blackboard or whiteboard or smartboard, whatever it was. Students used to listen, students used to write, and students used to mug up the things. But now the NEP 2020 changes this teacher-centered approach into student-centered approach. Now the educator has to teach in a way that all the learners of his or her class understands the topic. The educator have to educate in a way that the critical thinking, the creativity, the complex thinking ability it nurtures. Now, it is very important. It plays a pivotal role in the development of a child, and it helps in future. So it was a brief introduction about NEP. It was a summarized view about NEP 2020. Now, let's talk about the reforms that are needed in science. While teaching science, what are the things now we have to do? We have to start doing so that what NEP 2020 plans or says, we ensure that. So the first thing, when we talk about holistic learning in science, it indicates cognitive, emotional, and social dimensions of education. So when we teach science, a student should be able to understand through the real world context. Our educators should be able to encourage student to connect with the different concepts of the topic and by the topic. And a student or learner should be able to think deeper and deeper. They should be curious. They should be involved in the topic that you have started. They should be thinking, they should be asking questions like how, why, what if. It's a very simple approach that if in a science class, students are not asking questions like why is it happening, sir or ma'am, how is it happening, what if this happens on instead of this. बच्चे जब तक ऐसे सवाल नहीं पूछ रहे साइंस क्लास में, it's not a science class then. It may be a lecture class, English class, language class, it may be a social science class. But if the questions are not being asked, if there is no involvement in the class, that class cannot be said as a science class. Now, the comprehensive approach to knowledge. Now, this approach nurtures the critical thinking and the problem solving skills by engaging students in hands-on activities. Like since 2021, NEP 2020 के आने के बाद 2021 से जब trainings पे ज़्यादा focus किया गया, although the trainings were going on from 2018 I think, but 2021 के बाद जब इन पे focus बढ़ाया गया, तो हमने एक चीज के बारे में जानना स्टार्ट किया दैट स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए ना साइंस क्लास में। इन चीजों को करके देखे, खुद से टच करे, खुद से चीजों को यूज करे, खुद से कुछ चीजों को बनाए, खुद से कुछ चीजों को बिगाड़े, तब जाके वो सीखते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट कोलैबोरेटिव अप्रोच, जिसमें हम लोग टीम वर्क को प्रमोट करते हैं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स देते हैं हम लोग, एंड
Through this, we enhance the motivation of the learners. We enhance their love for learning science. See, we all have seen हमारे schools में science exhibitions होती हैं, टीम बनाते हैं बच्चे, अपने पसंद की एक प्रोजेक्ट चुनते हैं, यहाँ टीचर की इन्वॉल्वमेंट काफी कम होती है, दे जस्ट एक्ट लाइक अ मेंटोर और गाइड और अ मोटिवेटर, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है वो. एंड फाइनली व्हेन प्रोजेक्ट कम्स, द मॉडल्स आर प्रेजेंटेड इन एग्जीबिशंस, हमें देखने को मिलता है कि बच्चों ने काफी अच्छा किया. सो दिस वे वी promote the comprehensive approach of education. Now, if we talk about the key components and the benefits, see, research indicates that holistic learning is not only a thing which promotes academic performance, but it also develops essential life skills, preparing students for complexities beyond the classroom. And this is the reality. We all have faced this because जैसे बॉलीवुड में एक धारावाहिक आती थी टीवी पे, कभी सास भी कभी बहू थी, ठीक वैसे ही टीचर भी कभी छात्र थे. तो जब हम छात्र थे, हमने भी पढ़ाई करी, हमें हमारे क्लासरूम्स में काफी सारी चीजें सिखाई गई, बट उस क्लासरूम से बाहर आने के बाद का जो जीवन था, वहां हमने देखा कि यहाँ जो चैलेंजेस हैं वो थोड़े अलग हैं, थोड़े क्या काफी अलग हैं. जो एक आइडियल इन्वायरमेंट हमें क्लासरूम में मिलता है, वो आइडियल इन्वायरमेंट हमें सोसाइटी में नहीं मिलता, रियल लाइफ में नहीं मिलता. जैसे बैलेंस्ड सिचुएशंस क्लासरूम्स में मिलती हैं, वैसे रियल लाइफ में नहीं मिलती. सो while teaching science, when we promote critical thinking, while teaching science, when we promote problem solving skills, complex thinking abilities, we prepare our learners to face the complexities of life. क्योंकि जीवन में आगे चल के ना 100 बच्चों में से 4 के काम में आने वाला है शायद कि पीएच का डेफिनेशन क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू क्या है अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो डाइल्यूशन का प्रोसेस क्या है. ये डेफिनेशंस 100 में से 5 बच्चों के काम में आ सकता है. वो 5 बच्चे भी तब अगर वो साइंटिस्ट बन जाते हैं या आप ही के सब्जेक्ट के टीचर बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, तो बाकी 95 जो है ना, उनके यूज में वो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आती है, उनके यूज में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, वो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग एबिलिटी आती है, उनके यूज में वो पीएच की डेफिनेशन नहीं आती है. सो वी हैव टू फोकस व्हाट वी आर डिलीवरिंग इन आवर क्लासेस. देन द एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन साइंस एजुकेशन. जब भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात आती है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डिस्कशन ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जैसे ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात आती है, ये जो है ये पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ दिया जाता है साइंस टीचर्स के ऊपर कि भैया एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो साइंस टीचर ही करा सकते हैं. इंग्लिश टीचर्स सीधे सीधे कहते हैं कि हम लोग एक्सपीरियंस कराएंगे. जूलियस सीजर पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं रोल प्ले करा सकता हूँ. रोल प्ले से एक्सपीरियंस थोड़ी होता है. सोशल साइंस वाले टीचर्स कह सकते हैं हम लोग दिखा सकते हैं, हिमालय के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हिमालय पे थोड़ी लेके जाएंगे उनको, वीडियो दिखा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बनवा सकते हैं. बट साइंस टीचर्स ऐसा नहीं कह सकते. साइंस टीचर सोडियम पढ़ाते हैं तो सोडियम दिखाते हैं. साइंस टीचर्स जब पढ़ाते हैं कि सोडियम एयर में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो दिखाते हैं और वो दिखा सकते हैं. नहीं सिर्फ दिखा सकते हैं, वो बच्चों को सिखा सकते हैं कि वो खुद भी कर पाए. सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन science education is the most important thing. And what happens when you opt experiential learning? The very first thing, the involvement of the students increases. And when the involvement of the students increases, automatically the learning process increases. See, when we are talking about this, we have to talk about 4 key concepts of learning. When you start teaching something, when you start a discussion on any point, अभी भी जब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ, I have to play with your psychology. अदरवाइज आप 1 घंटे बैठ के सुनेंगे नहीं. एंड इट गोज इन 4 डायरेक्शंस, या ऐसे कह सकते हैं कि 4 अलग अलग स्टेप्स में चीजें प्रेजेंट होती हैं. आप पढ़ा रहे हैं, आप कहीं स्पीच दे रहे हैं, आप किसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, वहां आपको अपनी बातें रखनी है. कहीं भी इफ यू आर स्पीकिंग, इट गोज इन 4 ways. द फर्स्ट इज अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस.
where the brain is unconsciously not ready to listen, not ready to understand. So टीचर्स के लिए एक अच्छी बात ये होती है दैट हम लोग क्या करते हैं कि हमें जब एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करना होता है उसके 2 दिन पहले बताते हैं कि अब ना 2 दिन बाद ये वाली चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग. So you have to be prepared. This chapter is very important. इसमें अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं. So what we do, we break that unconscious incompetence. बच्चे के माइंड को हम लोग अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेट तक लेके आते हैं. बच्चे उस चैप्टर को या उस टॉपिक को पर्टिकुलरली पढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं. बट देन कम्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. अब आपने बता दिया कि अच्छा देखो हम लोग ये वाले टॉपिक पढ़ने वाले, ये वाले चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं. बच्चे घर गए, उन्होंने बुक पलटा, उनको दिखा क्या रे इसमें तो न्यूमेरिकल्स है. तो सर अगर इसको पढ़ाएंगे तब तो पूछेंगे, इसमें तो टफ क्वेश्चन है, ये चैप्टर ही टफ लग रहा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा चैप्टर है. तो देन दे रेजिस्ट टू लर्न. देन कम्स द सेकंड स्टेज, द कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, वेयर द ब्रेन इज ready to not accept. You consciously are not accepting the knowledge that is being given to you. And here we as an educator reach to the toughest part. ये हमारे लिए toughest part होता है when बच्चे को हमें conscious incompetence से लेके जाना होता है conscious competence तक, कि बच्चा जानबूझ के नहीं पढ़ रहा था, अब जानबूझ के वो पढ़े. So we opt different teaching methodologies. We use storytelling method, we use chalk and talk method, we use lecture method, we use group discussion method, we use demonstration method, we use hands-on experience method, the experiential learning method, and many more methods we use. ये सारे methods हम लोग आजमाते हैं और बच्चे को लेके आते हैं conscious competence तक. And when the learner comes to conscious competence, now they are listening to you, they are trying to understand the things, they are trying to grasp the things. वो अब रट रहे हैं, वो अब नोट्स बना रहे हैं, वो अब चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ तक आने के बाद what happens, a teacher, a normal teacher stops and then बच्चे रटते हैं, एग्जाम में मार्क्स लेकर आते हैं, that's it. But when we talk about a good teacher goes to the fourth step. गुड टीचर इंश्योर्स कि बच्चे की जो कॉन्शियस कॉम्पिटेंस थी वो चेंज हो कॉन्शियस अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में. व्हाट हैपेंस व्हेन वी टॉक व्हेन अ चाइल्ड द लर्निंग रीचेस टू द फोर्थ स्टेज, द अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. मैं इसको काफी सिंपल से एग्जांपल दे सकता हूँ. लाइक आप लोग ये कमेंट बॉक्स में ना सिर्फ यस और नो लिखिएगा. आप में से कितने टीचर्स ऐसे हैं जो रैंडमली कहीं जा रहे हैं, कोई बैनर दिखा, उसमें 2 गलती दिख गई उनको, दे वर नॉट फाइंडिंग द एरर बट उनको 2 गलतियां दिख गई. कितने लोगों के साथ होता है? अगर होता है आप यस लिखे भाई तो बस यस. आपका कोई मूड नहीं था कि आप गलती निकालो बट गलती दिख गई ऑटोमेटिकली. अगर इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स हैं, आपके साथ कई बार होता होगा कि आपके पास एक बढ़िया सा इनविटेशन कार्ड आया या एक लेटर आया, इंग्लिश में था, लेटर का कंटेंट अच्छा है, यू वर नॉट फाइंडिंग द एरर्स, आपको मार्क्स नहीं काटने थे बट आपको 2-4 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दिख गए. कहीं एपोस्ट्रोफी एस लगाने में गलती हुई है, कहीं कॉमा गलत जगह पे लगा हुआ है. होता है हमारे साथ, हम सभी के साथ होता है ऐसा. नो, दिस इज द अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, बिकॉज कॉन्शियसली हमने ये कॉम्पिटेंस डेवलप की है कि हमें इवेलुएट करते वक्त, कॉपी चेक करते वक्त गलतियां ढूंढनी है. तो अब हमारा ब्रेन जो है वो अनकॉन्शियसली भी गलतियां ढूंढ रहा है चीजों से. हमें पहले वो गलती दिखती है, आप पेज निकालेंगे आपको सबसे पहले वो गलतियां दिख जाती है, ऐसा लगता है वो हाईलाइट हो गई. That is unconscious competence. So when you teach science, when you use experiential learning method, you ensure that a child travels from unconscious incompetence to conscious unconscious competence, ताकि बच्चे के लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो उसको याद ना करना पड़े कि अच्छा क्लास 8 के चैप्टर 5 में मैंने पढ़ा था ऐसा था. बच्चे के दिमाग में वो चीजें ऑलरेडी हों, वो उसको यूज कर पाए. Like when I talk about chapter 5 or 6,
क्लास 8 में भी टीच कंबसन एंड फ्लेम, जहाँ पे हम लोग कंबसन के बारे में समझाते हैं, फ्लेम के बारे में समझाते हैं। फिर उसमें एक टॉपिक आती है फायर एक्सटिंग्विशर की, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, आग कैसे बुझाना चाहिए, किस टाइप की आग में कौन से टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने चाहिए, वो सारी चीजें बताते हैं हम लोग। बच्चा पढ़ता है उसको, याद करता है उसको, एग्जाम में लिख के मार्क्स भी लेके आता है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर एक्चुअली में आग लग जाए, तो आग किसी भी तरीके से हो, ज्यादातर लोग जो हैं वो नल की तरफ भागते हैं कि पानी लेके आओ, आग बुझानी है। एंड अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के चलते आग लगी है और मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जाके पानी की तरफ दौड़ रहा है कि आग बुझा दें, सो दैट्स माय फेलियर। क्योंकि मैं सिर्फ कॉन्शियस कॉम्पिटेंस तक लेके जा पाया, जहां उसकी सेंस इतनी है कि आग को पानी से बुझाया जा सकता है। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस तक मैं नहीं लेके जा पाया, जहां उसकी समझ इतनी हो जाए कि इलेक्ट्रिसिटी से लगी हुई आग को पानी से नहीं बुझाते। सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल, कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ हमें फोकस क्यों करना चाहिए। Then, if we discuss about the laboratory experiments, field trips, project-based assignments, ये सारी चीजें we already do. Now, what is changed in NEP 2020? Like field trips हमारे कम होते हैं साइंस एजुकेशन में, but project-based assignments होते हैं. But what happens? Project-based assignments जो हैं, उनको सब्सिडरी की तरह ट्रीट किया जाता है। क्या चैप्टर पढ़ा दिया, सारा लेक्चर पार्ट हो गया, नोट लिख लिया 10 पेज का, रट्टा मार के नोट्स पढ़ लेना, समझ लेना, और अब बस चूंकि एनसीईआरटी बुक या जो भी बुक है जो स्कूल में चलती है, उसमें चूंकि प्रोजेक्ट दिया हुआ है और मैंने पिछले 2 महीने से नहीं कराया था, तो ये वाला एक बना दो। ये मजाक मजाक में जो हम लोग प्रोजेक्ट देते हैं ना, दैट्स द बैड थिंग। व्हेन वी असाइन प्रोजेक्ट to a student, to a learner, or a team of learners, the motto should be clear. The motto should be clear in the mind of the educator, and the motto should be clear in the mind of the learner. Like whenever I assign a project कि आपको आई की डायग्राम बनानी है और यू हैव टू प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ ह्यूमन आई टेल द स्टूडेंट की क्यों बनानी है, फायदा क्या है इससे, क्या सीखोगे, पेंटिंग करने आ जाएगी, इज नॉट माई थिंग। आई डू नॉट वांट कि तुम्हें अच्छे से कलर्स मिक्स करने आ जाए। आई हैव सम अदर प्लान्स। हाँ, मेरे प्लान को अचीव करते करते कलर मिक्स करने आ जाए, अच्छी बात है। बट आई एज अ साइंस टीचर डू नॉट प्लान कि तुमको बढ़िया आंख बनानी आ जाए। आई एज अ साइंस टीचर प्लान कि जब तुम आंखों के बारे में बनाओ, उसके डायग्राम को बनाओ, उसके सारे पार्ट्स को लेबल करो, तो तुमको ये समझ में आए कि कौन सी पार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, एंड हाउ एक्चुअली द आई वर्क्स, हाउ एक्चुअली इट फंक्शंस। क्योंकि जब बनाओगे तो क्वेश्चन पूछ पाओगे। वी ऑलवेज है ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। हम लोग कई बार ताना मारते बच्चों को, टफ सा टॉपिक पढ़ा रहे थे, आपने एक्सपेक्ट किया था कि अरे बच्चे डाउट पूछेंगे, बच्चों ने पूछा नहीं, तो ताना मारते हैं हम लोग कि पढ़े ही नहीं हो तो कहाँ से आएगा। So this happens when we assign them the project based things. We need to be clear in our mind also कि ये चीज दी है बनाने के लिए, तो क्या सीखेगा बच्चा। बच्चे को भी बताइए कि ऐसा करोगे तो इससे ये फायदा होगा, ये सीख लेना, और इन पॉइंट्स पे ध्यान देना जब तुम कर रहे होगे, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। allowing students to observe many time what happens। आप सपोज आप केमिस्ट्री लैब में लेके गए, बायो लैब में लेके गए, बच्चों को सेल के स्ट्रक्चर दिखा रहे थे, इमेजिन करिए बायो लैब में ले जाकर। हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम दिखा देते हैं, सेट किया, लो देख लो, ये वाला चीज दिख रहा होता है। व्हाट इज हैपनिंग, जब मैं बच्चों को एक डायग्राम दिखा रहा हूँ सेल की, देखो ऐसा वाला ना एक डायग्राम वहां पे दिख रहा है, अंदर भी देखोगे दिख जाएगा। नाउ द चाइल्ड इज नॉट फोकसिंग ऑन एनी अदर थिंग, द चाइल्ड इज नाउ फोकसिंग ऑन दैट सिंपल डायग्राम। वो उसको उसी को फाइंड कर रहा है, उसी पे फोकस कर रहा है। नाउ हमारे पास जो परमानेंट स्लाइड्स होती हैं, इफ यू हैव सीन अमीबा की जो आप स्लाइड्स देखेंगे, वहां पे लिखा होता है, आप जनरली लाइक आई हैव सीन, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, बट आई हैव सीन बाइनरी फिजन इन अमीबा। मैंने देखा है, मेरे एक कलीग पढ़ा रहे थे, तो कल उन्होंने बताया कि सी तुमको बाइनरी फिजन दिखेगी, सो स्टूडेंट्स वर फोकसिंग ऑन बाइनरी फिजन ओनली, कि जहां उनको बाइनरी फिजन होता हुआ दिख रहा है, ओनली दैट पर्टिकुलर अमीबा को वो फोकस कर रहे थे। दो चार बच्चे ही थे जिन्होंने फोकस किया कि उसी स्लाइड में आसपास एक दो और अमीबा ऐसे भी दिख रहे हैं जहां पे बाइनरी फिजन नहीं हुई है या कंप्लीट हो चुकी है। सो वी मस्ट अलाउ some time to the students to observe
फिर उनके ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं हम लोग, एंड देन वी कैन करेक्ट कि नहीं ये जो ऑब्जर्व किया ऐसा नहीं, फिर से देखो. व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू दिस? क्यूरियोसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि पहले का आंसर कुछ और है, दूसरे का डेफिनेटली कुछ और आने वाला है. देन ब्रिजिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस. थ्योरेटिकली चीजों को बताना कितना आसान होता है, बट इन प्रैक्टिकल व्हाट हैपेंस? Things change. Like telling a student that when HCl reacts with NaOH, NaCl is formed as a neutral salt. बच्चा साइंस लैब में जाए, केमिस्ट्री लैब में जाए और इसको करे, and suppose a notorious child is there, he mixes NaOH with HCl and NaCl is formed along with H2O, and he try to drink it. What do you think? Is it safe? Write in the comment box. If you are a science teacher, write in the comment box. Is it safe कि टेस्ट ट्यूब में जो NaOH और HCl प्रिपेयर की, जो NaCl का फॉर्मेशन हुआ विथ वाटर, is that safe to drink? The answer will be simply no, because correct measurements are not taken, because it is not purified. It may happen that you think that NaCl that is prepared is neutral in nature, but due to the dilution of acid and concentration of NaOH or dilution of NaOH, it can be acidic or it can be basic also. So it is very tough, it is very risky. So बोर्ड पे ये लिख देना और प्रैक्टिकल में ये करके एक्चुअली दिखाना, बच्चे को ये सारी चीजें सिखाना और समझाना, इट हैज अ चेंज. लाइक हम लोग कितने आसानी से समझाते हैं बच्चों को कि हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड, बट वो पॉपिंग साउंड आती कैसे है, कौन कौन से प्रिकॉशंस बरतने पड़ते हैं हमें, कैसे चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन को, अगर जलाना हो तो कैसे जलाएंगे, वो सारी प्रोसेसेस आप थ्योरेटिकली नहीं बता सकते. इफ यू विल टेल देम, they will not be able to fully understand it. Now then comes to, let's talk about the use of technology in science education. Now again, ये सारी चीजें ठीक है, क्लास 9 में आते हैं. क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, मैटर अराउंड अस, और इज मैटर अराउंड अस प्योर. व्हेन वी टीच दिस चैप्टर्स, ऐसा लगता है कि ये पूरी थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें प्रैक्टिकल्स दिखाने लायक कुछ है ही नहीं, बच्चे बोर हो रहे होते हैं. एंड इन these types of chapters आप hands on experience जो कि बच्चों को दिखा सकते हैं, बट अगेन एक क्वेश्चन आती है कि पार्टिकल्स कैसे दिखाएं उनको. एंड यूज आती है टेक्नोलॉजी के. यू कैन यूज सिमुलेशंस, यू कैन यूज वर्चुअल लैब्स, यू कैन यूज tools like VR glasses to show them the particles. जहाँ पे और भी पार्टिकल्स के बारे में चीजें पढ़ाई जाती हैं, वो सारी चीज आप सिमुलेशंस और वर्चुअल लैब्स के थ्रू उनको दिखा सकते हैं. Then let's discuss about the assessment in science education. We talk about formative assessments, we talk about promoting continuous evaluations of a traditional examinations, we talk about including projects, presentations, peer assessments, and many more things. Now the question is, why is it important in science? Or is it something that should be in paper only? We should move on with our traditional method. The answer is no. Because again, if we come to the definition of science, science is the logical study. Science is the study of logic and observations. Science demands logic. है ना. आप अगर साइंस की बात करते हैं तो वहां लॉजिक होती है, वहां जादू नहीं होता, वहां चमत्कार नहीं होता, वहां लॉजिक होती है. वहां कलरलेस और कलरलेस दो चीजें मिलके अगर रेड हो रही हैं तो लॉजिक है. वहां अगर रेड और कलरलेस मिलकर ब्लैक हो रहा है तो लॉजिक है. वहां ब्लैक चीज किसी के ऊपर गिर रही है और ब्लू दिखने लग रही है तो लॉजिक है. देयर इज अ पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन फॉर एनीथिंग दैट इज हैपनिंग.
This is science. But when we do not rethink about the evaluation process, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जब हम बात करते हैं, अगर हम लोग हर बार रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट से क्वेश्चंस देते रहें और सिर्फ उसी हिसाब से जज करते रहें, तो फिर वो बच्चा हमेशा टॉप करता रहेगा जो उसने रट्टा मारा है सिर्फ, जिसने एक्चुअली कॉन्सेप्ट को समझा नहीं, और वो बच्चा हमेशा फेल होता जाएगा जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं बट आपके वर्ड्स नहीं याद है उसको, उसके अपने वर्ड्स हैं, वो अपने वर्ड्स में आंसर करेगा. सो there is a need to rethink about the assessment. There is a need to implement the peer assessment, formative assessment, and many more things, the project based assessments. That is why हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी शिफ्ट कर रहे हैं. The scientific temper, as I was telling, ये पॉइंट हमने एक्चुअली डिस्कस कर लिया, that when we teach science, when we complete a topic and when we move on to the next topic, we must ensure that scientific temper has been developed in the learners. अब वो उन चीजों का यूज करेंगे अपनी लाइफ में. Not only that, in each and every field of life, what science teaches is first observe, assume, then seek evidence, engage in scientific query, try by yourself. ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं साइंस में. So when we teach science, when we try to develop a scientific temper, we prepare our learners to have a good observation skill, कि वो चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करें. We ensure that they seek a logical explanation, a scientific explanation behind everything. Otherwise, हमारे समाज में कई सारी भ्रांतियां आती रहती हैं. एक छोटे से ग्रुप को एक लंबे वक्त के लिए एक्टिव होना होता है और एक नई इल कस्टम हमारी सोसाइटी में आ जाती है. एंड ओनली साइंटिफिक टेम्पर कैन रेजिस्ट दैट इल कस्टम, क्योंकि फिर वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगेंगे और वहां तो होगा नहीं. हाउ इट विल हैपन अगेन, जैसे ही हम लोग हाउ पे आते हैं, अगेन यू विल हैव टू start having the hands-on experience, group discussion, real-world problem solving, encouragement of students. These are all things are necessary. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर आएगी अगर हमारे अंदर भी साइंटिफिक टेम्पर हो. Now, if we talk about the implementation strategy, it is not a very tough thing. Now, so first thing which we can do, we can opt the activity-based learning techniques. इट मे हैपन कि मैं यहाँ बैठ के बातें कर रहा हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. एक टीचर ऐसे भी होंगे जो करना चाहते हैं बट उनके स्कूल में वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. सो इट डजंट मैटर. आपके यहाँ अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो आप केमिस्ट्री लैब नहीं लेके जा सकते बच्चों को. ये हो सकता है आप स्मार्ट बोर्ड पे उनको पार्टिकल्स नहीं दिखा सकते. देयर आर अदर मेथड्स दैट्स यू कैन यूज. यू कैन बिल्ड अ कॉन्सेप्ट. लाइक स्मार्ट बोर्ड्स जब नहीं थे तब भी हमने पढ़ा है ना, हमने पढ़ाई करी. when we were studying, no one was there to show us कि देखो स्मार्ट बोर्ड पे ऐसा है, प्रैक्टिकल्स पार्टिकल्स ऐसे ऐसे होती हैं, इस तरीके से मूव करती है. बट our teachers made sure that हमारा concept clear हो. So if there is a lack of resource, you can use the alternate methods. You can show them some real life situations. You can show them some like when we talk about field trips are especially for those जो टेक्नोलॉजी की यूज कम कर पाते हैं या टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी कम है. Now, interdisciplinary approach in science. Now, let's have a question. Is it important? Is it important to implement various subjects in science? Please write yes or no. Okay. Yes, it is important. And the question comes, how? Why? How? See, bio teachers तो कर लेते हैं, वो तो हम लोग तो कर लेते हैं सर. हमारे यहाँ इतनी सारी हम लोग लाइफ की बातें करते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेट हो जाती है चीज. द प्रॉब्लम कम्स व्हेन वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री, व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिक्स, कि दूसरे सब्जेक्ट से कैसे रिलेट करें उसको. देयर आर वेरी सिंपल थिंग्स. जहाँ आप लाइक
आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को देखें, आप देखेंगे वहां बूझो और पहेली काफी फेमस है। बूझो और पहेली रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स के थ्रू साइंस को लेके आते हैं, रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स के थ्रू सोशल साइंस की बातें करते हैं। सो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। जब भी हमने रियल वर्ल्ड के बारे में बात करना स्टार्ट किया, इट इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू लिटरेचर। साइंस को आर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट के मेथड से। हम लोग साइंस पढ़ाते पढ़ाते जब हम लोग किसी साइंटिस्ट के बारे में पूछते हैं, वी टॉक अबाउट देयर लाइफ, तो कहीं ना कहीं हम लोग हिस्ट्री की तरफ भी मुड़ते हैं, दैट हाँ आपको इनकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, ये कैसे हुआ उसके पीछे जानना पड़ेगा। लाइक फिजिक्स टीचर्स जब बताना स्टार्ट करते हैं इन देयर मिडिल क्लासेस में, प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, गैलीलियो गैलीली के बारे में बताते हैं, तो फिर वो बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। तो आप जैसे ही स्टार्स से मूव करके गैलीलियो गैलीली की लाइफ की तरफ मूव करते हैं, उनको कितने प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, जो भी डिटेंशन वगैरह उनको मिला, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। दैट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। व्हाट हैपेंस विद दिस अप्रोच, दैट एक तो बच्चों के मन में जो होता है ना कि साइंस के टीचर को सिर्फ साइंस आता है, उनको इंग्लिश नहीं आता। इंग्लिश के टीचर को सिर्फ इंग्लिश आता, साइंस नहीं आता। मैथ वाले को साइंस नहीं आ सकता, साइंस वाले को सोशल साइंस नहीं आ सकता। ये वाली भ्रांति दूर होती है, तो स्टूडेंट्स आपसे ज्यादा कनेक्टेड फील करना स्टार्ट करते हैं। देन दे गेट अ होल नॉलेज। ऐसा नहीं कि लाइक गलीलियो गैलीली के बारे में बता रहे थे तो उनके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा पता चला उनको, इन अ समराइज्ड वे पूरा जीवन पता चला, जिसमें एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डिस्कवरी थी उसके बारे में भी पता चला। नाउ engaging AR and VR in science education, if you have the resources, आप AR और VR का यूज कर सकते हैं। AR इज ऑगमेंटेड रियलिटी, VR इज वर्चुअल रियलिटी। AR में क्या होता है कि आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो दिखेंगी, उसमें कुछ चीजें एडेड और रिमूव्ड रहेंगी, जिसके थ्रू आप साइंस को पढ़ा सकते हैं, है ना। एआर के एग्जांपल्स आप अपने जो शॉपिंग एप्स हैं हमारे, उनमें देख सकते हैं। लेंसकार्ट काफी पहले से एआर का यूज कर रहा है। आप अमेजोन वगैरह पे भी देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखता है ट्राई। आप ट्राई पे क्लिक करते हैं, आप फर्नीचर ले रहे हैं, आप एक फोन ले रहे हैं, वो आप दिख जाता है कि आपके टेबल पे कैसा दिखेगा। आप एक टेबल लैंप ले रहे हैं, वो सारी चीजें दिख जाती है। दैट इज एआर, कि आपके रियल वर्ल्ड में ही वो चीजें वर्चुअली एडेड होकर दिखती हैं। इन वीआर पूरी की पूरी वर्ल्ड वर्चुअल होती है, मूवी की तरह ही होती है, वो सारी चीजें वर्चुअली आपको देखने को मिलती है। बट डिफरेंस ये होता है कि आप उस वर्चुअल वर्ल्ड में रहेंगे। वीआर जब भी डिस्कस होती है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि तब तो टीवी जैसा ही हो गया। सो इट्स नॉट लाइक टीवी। वीआर एआर में क्या है कि वो चीज आपकी दुनिया में आई है, वो एक पर्टिकुलर चीज। अगर आप मान लीजिए माइक्रोस्कोप के बारे में बता रहे हो और आपने एआर के थ्रू दिखाया, तो वो माइक्रोस्कोप आपके घर के टेबल पे दिखिएगा। बट आप वीआर में देखेंगे तो आप किसी ऐसे लेबोरेटरी में जाएंगे जहां माइक्रोस्कोप रखी हुई है, वर्चुअल है वो लेबोरेटरी। वहां जो माइक्रोस्कोप रखा हुआ है वो वर्चुअल है, आप उस वर्चुअल दुनिया में गए हैं। वीआर ग्लासेस हम लोग यूज करते हैं, उसके थ्रू हमने देखा हुआ है। सो इफ योर स्कूल हैव द रिसोर्सेज, you as a science teacher must use AR and VR in science education. Now coding in science education can also be done, but उसके लिए आपको कंप्यूटर टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। पाइथन के बारे में टीचर्स काफी ज्यादा पढ़ाते हैं when they teach this in standard 9th and 10th, तो आप यूज कर सकते हैं। लाइक अगेन मैं बताऊं आपको, मैं जब स्टूडेंट था, मैं जब साइंस पढ़ता था, हमारे साइंस टीचर्स बोल देते थे जाओ पीपीटी बना के ले आना इस टॉपिक पे। तो व्हाट वर दे डूइंग, दे वर इंटरकनेक्टिंग, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी आ रही थी, टेक्नोलॉजी की यूज भी आ जा रही थी। अब पीपीटी पुरानी होगी, तो आप उनको पाइथन से रिलेटेड कुछ चीजें करने को दे सकते हैं, कोडिंग करने को दे सकते हैं। एंड देन एट लास्ट वी नीड टू डिस्कस अबाउट द challenges in integrating NAP. So what are the challenges? The first is lack of resources, then the lack of support from the schools. It can be a factor, but the important factor is the resistance among educators. It is wrong. See, educators should not resist to opt a new methodology of teaching. Then yes, if there is an insufficient training, it can also be a problem. So CBSE, Patliputra Sahodaya, or through in-house, the bodies are trying to provide adequate amount of training to the educators. Lack of resources can be a huge problem, but eventually
यहाँ बैठ के मैं बस बोल सकता हूँ, वो प्रोवाइड कराने का काम वो आपके स्कूल का है। देन द लार्ज साइज क्लासरूम एंड द एडिशनल असेसमेंट कल्चर। क्लास में जो ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है हमारे लिए, कि वो नई चीजें, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, डिस्कशन बेस्ड अप्रोच को वो हम लोग काफी लंबे वक्त तक फॉलो कर पाए। बट ये चीजें धीरे धीरे वक्त के साथ बदलेंगी, बिकॉज एनईपी इज टेलिंग सो, हमें बदलना होगा, हमारे मैनेजमेंट भी धीरे धीरे उस चीजों को अडॉप्ट करेगी। देन वन थिंग इज ऑल्सो देयर, ये ट्रेडिशनल असेसमेंट कल्चर, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया कि उसमें भी चेंजेस आना होगा। देन आफ्टर ऑल, what we need to cultivate the analytical skills, and finally we have to empower ourselves first. We have to learn about the new technology that are coming, the new techniques, the new methods, and we have to be committed to this innovative practice of science education, so that we can cultivate a critical thinking mind. We can cultivate a scientific temper in our learners, so that they, when they grow up, they grow up as a skillful citizen of this country. So thank you, teachers. This was my lecture part of this session. Now I'm seeing the chat box. If you have any doubt, any query related to the topic, you can ask. Okay, so I think no one has any doubt. So once again, thank you very much for joining this session on integrating NEP in science education. I was Vikas Kumar. Thank you very much.